डिब्रूगढ़ के डिकम में तेंदुआ पिंजरा बंद। कई दिनों से तेंदुए का आतंक मचा रहा। डिब्रूगढ़ शहर में अभी भी एक तेंदुए को वन विभाग पिंजरा बंद करने में असफल। डिब्रूगढ़ जिले में कई स्थानों में तेंदुए के विचरण से आतंक मचा हुआ है। डिब्रूगढ़ के डिकम में तेंदुए के देखे जाने के बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने में सफल हुई, मगर डिब्रूगढ़ के जीवन फूकन नगर में गत शनिवार को एक तेंदुए का विचरण करने का दृश्य कैद होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की लाखों कोशिशों के बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा। डिब्रूगढ़ शहर के विभिन्न अंचलों में तेंदुए को देखे जाने के बाद वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर जनता को सावधान रहने का आह्वान किया। रिहायशी इलाके में तेंदुए के घूमते हुए देखे जाने से विशेषकर रात्रि के समय में लोग घर से निकलना बंद कर दिए। हालांकि वन विभाग की टीम शहर में तेंदुए को पकड़ने लिए खाक छान रही है, मगर तेंदुआ हाथ नहीं आ रहा। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। एक्चुअली आमितो ट्रेप हिसाबे एटा मुर्गी राखिছোঁ। राति रखा है, दिनत बर्तमान केसटोत एकো नाথাকে। राति गधूली समय आमार स्टाफ जाए, जेहेतु पेट्रोलिंग जाए, स्टाफे ताते मुर्गी एटा राखे, रातिपुवा उलियाই आने। बाकी एटु इनफरमेशन एतियाলৈকে কি হৈ আছে আমি অকমান ইনভেস্টিগেট কৰিব লাগিব তাৰ বিহাইন্ড দা সিনস। পেট্ৰোলিং কৰি আছো, যেহেতু এডভাইজৰি নাম্বাৰ এটা দিয়া হৈছে, তাত মানুহে কন্টেক্ট কৰি আছে, কিন্তু বহুত মিস ইনফরমেশন আহিছে। আমাৰ স্টাফ গৈছে, কন্টিনিউয়াস ডিউটিতে আছে, কিন্তু তাতে কোনো তথ্য পোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱা শান্তিপাৰাৰ পৰা ইনফরমেশন আহিছিলে, তাতে আমি সার্চ অপারেশন কৰিলোঁ। একো পাগ মার্কস নাই, একো স্ক্ৰেচ মার্কস নাই। হয়তো মেকুৰীও হ'ব পাৰে, তাতে মেকুৰী কাজিয়া হ'লেও এতিয়া ইনফরমেশন আমাৰ তেনেকৈ আহিছে। এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ৰাইজক যাতে মিস ইনফরমেশন স্প্ৰেড নকৰে, যেহেতু বাঘটো এটা জেগাত নাথাকে, কেতিয়াও ঘূৰি থাকে, তাৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। এইটো ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো মানুহ অকণমান সজাগ হোৱাটো বেষ্ট। অকণমান এৱাৰ থাকক, প্ৰিকশ্যনছবোৰ যোনবোৰ এডভাইজাৰিজ ৰিলিজ কৰা হৈছে সেইটো অকণমান চাই চিতি চলক। ৰাতি যাতে অকলে অকলে বাহিৰত ঘূৰি নাথাকে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অকণমান চকুৰ আগত ৰাখিব। যোনবোৰ অকণমান নিজান এৰিয়া সেইবোৰত যাতে অকলে এৰি নিদিয়ে। এই বাঘটো আজি জনাঞ্চলত অহা প্ৰায় আমি দুমাহৰ পৰা মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে। সন্ধিয়া 5:30-6 বজাৰ লগে লগে মানে বাঘটো আহি কিনে ৰাস্তা কাষত থাকি মানুহৰ গাত জঁপিয়াই মানে হেৰি কৰিব বিচাৰে, চিকাৰৰ কাৰণে মানে ৰাখিব বিচাৰে। লগত ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে এইটো এটা মতা বাঘহে, কিন্তু আমি কিছু লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে তাত পোৱালি থকাও আছে। গতিকে পোৱালি থকা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আৰু এটা যে বাঘ আছে, আমি সেইটো কাৰণে আমি স্পষ্ট হ'ব পাৰিছোঁ। কাৰণ পোৱালি থকাৰ কাৰণে মতা বাঘৰ লগত পোৱালি কেতিয়াও নাথাকে। গতিকে মাইকী বাঘ এজনী আৰু ইয়াত থাকিব লাগে।